Good morning, guys. In today's section, we are going to discuss about the Einstein coefficient. Okay, and in this expression, we are trying to determine the relationship between Einstein coefficient A and B. Right? इसके रिगार्डिंग हमने थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में बातचीत किया था. एग्जैक्टली उससे आगे हम लोग बात करेंगे. Now we will go to directly on the expression. Right? What is Einstein coefficient? Einstein coefficient क्या है? देखो, Einstein coefficient is exactly, it is an expression, is the relationship between the Einstein coefficient A and B. Then see, what is A? What is A? A is a spontaneous emission. Spontaneous emission. And what is B? B is a stimulated emission. Stimulated emission. Also, the B gives the absorption process also. Absorption also. Now, exactly we'll try to understand what is the terminology of A and B. See, A is a spontaneous emission, means whenever electrons are making a transition from higher energy level to lower energy level, when it falls down, some amount of the energy is released out, and this released energy is called as a emission. बराबर? मतलब emission कब होता है? Emission होता है जब इलेक्ट्रॉन अपर लेवल टू लोअर लेवल क्या कर रहा है? ट्रांजिशन कर रहा है. यहाँ पे एक spontaneous emission है, एक stimulated emission है. बराबर? And second, the absorption. Absorption means what? When the ground state electron make a transition from lower energy level to higher energy level. Done? This such process is called as absorption. क्योंकि वो एक्सटर्नल फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और तब वो क्या करेगा? अपने ग्राउंड स्टेट छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. So we will try to determine the same process one by one. Okay. First of all, we will try to understand what is the absorption. देखो, ये दो notations आपके लिए important है. हम लोग डिस्कस करेंगे. Okay. And the first process is a absorption process. First process is a absorption process. Absorption process. ठीक है? First process is a absorption process. See what happened in the absorption process. In the case of the absorption process, the electron from ground energy level, we will consider E1 is a ground energy level, yeah, lower energy level, and E2 is a higher energy level. And electron from the ground energy level make a transition to the higher energy level by absorbing the external photon having energy E is equals to h nu. Right? What happened in absorption process? The electron of lower energy level first absorb the energy from external photon is equals to h nu, and he will break the binding energy first at the ground level. मतलब whatever amount of the energy electron have, with the help of this energy electron is bound at the ground level, and the external energy which is going to provide to the binding energy provide to the electron, ground level electron, first of all will tries to break that binding energy, and with the help of remaining energy he tries to jump from lower level to higher level. तो इसमें important प्रोसेस क्या हो रहा है? ग्राउंड लेवल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन कर रहा है h न्यूटन एनर्जी का, और लोअर एनर्जी से क्या कर रहा है? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर रहा है. सो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल make a transition to higher energy level by absorbing by
in this process, the electron from ground level make a transition to the higher level by absorbing energy exchanged by the external photon. यहाँ तक ठीक है? Then next point यहाँ पे लिखेंगे. Then this process is described by the Einstein coefficient. Process is described by Einstein coefficient B12. देखो why B12? हमने यहाँ पे लिखा है B. What is B? B क्या इंडिकेट कर रहा है? Absorption. तो B for absorption because this is absorption process. 1 2 means the electron are making a transition from E1 lower energy level to E2 higher energy level. That's why we put here the Einstein coefficient B12, right? Then the rate of absorption is given as rate of absorption R absorption is directly proportional to the rho of V N1. Rate of absorption क्या मिल रहा है हमें? Rate of absorption is directly proportional to the rho of V N1. Done? Then what is this? Notations. Okay? See what R absorption is directly proportional to the rho of V and 1. Right? Then what is where rho of V is a spectral energy density. Rho of V क्या है? Rho of V is a spectral energy density. And 1 is a number of electron at lower energy state. Right? मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, it is a electron density at lower energy state. ठीक है? Then see, this is still, it is a proportionality, it is not an equation, right? To make this equation we have to put there constant. Then this equation can be given as rate of absorption is equals to B12 rho of V N1. Suppose this is the equation number 1 where B12 क्या है? B12 is a Einstein coefficient of absorption. B12 क्या है? Einstein coefficient of absorption. Now this is the equation number 1, right? This is the first process. This was the first process, right? Now we will discuss second process called spontaneous emission. Process second, spontaneous emission. क्या देख रहे हैं हम लोग? Spontaneous emission. See what happened in this process. In a spontaneous emission, देखो, this is a lower energy state E1, this is a higher energy state E2. And in the case of spontaneous emission, the electron from higher energy level make a transition to the lower energy level without any external stimulation, or during this transition the energy H nu is released out. तो इस केस में क्या होगा? देखो, in a case of spontaneous emission, the electron from higher energy level make a transition to the lower energy level spontaneously. क्या कर रहे हो? Spontaneously क्या कर रहा है? ट्रांजिशन कर रहा है, उसके दौरान एनर्जी रिलीज हो रहा है H nu. ठीक है? तो हमने एक पॉइंट शायद
उससे पहले भी डिस्कस किया था कि एमिशन में और एब्जॉर्प्शन में एग्जैक्टली फर्क क्या है। एमिशन कब होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन आर मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, क्या करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसको कहते हैं हम लोग एमिशन। और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर will make a transition to the higher by absorbing the external energy from the external photon, right? तो this is the spontaneous emission process, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हायर लेवल टू लोअर लेवल में जंप कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस मतलब spontaneous emission process, in this process क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी level make a transition to lower energy level, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर रहा है स्पॉन्टेनियसली मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, ऑटोमेटिकली करेगा, ठीक है। नाउ सी this process is described by the Einstein coefficient. Process described by Einstein coefficient A21। अभी देखो why A21 क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन है, क्या देखो spontaneous emission indicated by A, right? That's why we put here A। 2-1 मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है एनर्जी लेवल 2 से एनर्जी लेवल 1 में, इसलिए हमने क्या दिया, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट दिया A21, यहां तक ठीक है। नाउ सी then the rate of spontaneous emission is given as, spontaneous emission is given as, हमें spontaneous emission कैसे मिलेगा, spontaneous emission मिलेगा R spontaneous is directly proportional to the N2 मतलब what is N2 is the number of electron at a higher energy level, then to remove this proportionality sign, we will put a constant as R spontaneous is equals to A21 N2, and boss this is the equation number second। in this case A21 क्या है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A21 is a Einstein coefficient of spontaneous emission, ठीक है। and N2 क्या है, N2 is a number of electron, N2 क्या है, number of electron at higher energy state। I hope कि यहाँ तक का पार्ट आपको समझा। ये this was the second process, this is the spontaneous emission, उसका इक्वेशन क्या मिल रहा है हमें, ये वाला, ठीक है। मतलब अभी तक दो प्रोसेस मिले, ओके। नाउ वी विल गो अहेड विद द थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस stimulated emission। देखो ये this is also emission, और हमने कहा है कि emission का मतलब क्या है, emission means इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जंप करेगा, बराबर, इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर। यहाँ पे भी क्या होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हायर टू लोअर ही करेगा, लेकिन क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन। तो देखो प्रोसेस एग्जैक्टली क्या कहते हैं, प्रोसेस कहती है this is the lower energy state E1, this is a higher energy state E2। और क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अपर टू डाउन जाएगा। बट इन केस ऑफ द स्टिमुलेटेड इमिशन, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट make a transition to lower energy state,
because of the stimulation of external energy E is equals to h nu. देखो यहाँ पे इमिशन हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन E2 स्पॉन्टेनियसली नीचे ट्रांजिशन नहीं करना चाहता, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं h nu और इसको स्टिमुलाइज कर रहे हैं टू मेक अ ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट E2 टू E1. ठीक है, देखो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव एब्जॉर्प्शन. बराबर, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव एब्जॉर्प्शन, राइट. तो क्या हो रहा है, पहले ये क्या कर रहा है, हायर एनर्जी स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल फोटोन की एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है और बाद में वो एनर्जी क्या कर रहा है, नीचे ट्रांजिशन कर रहा है. इसके बाद भी इससे भी एनर्जी h nu इतनी एनर्जी रिलीज आउट होगी, इससे भी एनर्जी रिलीज होगी. यहां तक ठीक है. मतलब नाउ से हाउ वी कैन राइट इट. देखो फर्स्ट वन, this process in this process electron from higher energy level make a transition to lower energy level. बराबर, कैसे करना है, बाय स्टिमुलेशन. मतलब हम लोग उसको स्टिमुलाइज करके नीचे भेज रहे हैं. नाउ सेकंड प्रोसेस, इन दिस केस द stimulated emission is described by the Einstein coefficient. Stimulated emission is described by Einstein coefficient B21. See why B21? Because the B indicates the stimulation emission and 1,2 means the electron from higher energy state make a transition to the lower energy state. याद है, ठीक है. Now the rate of stimulated emission rate of stimulated emission is given as R stimulation is directly proportional to the rho of V and 2. कैसे इंडिकेट हो रहा है, rate of stimulation is directly proportional to the rho of V and 2. यहाँ तक ठीक है. Means the rate of stimulated emission is given by R stimulated directly proportional to rho of V into N2. Now see where rho of V क्या है, rho of V is a spectral energy density and N2 है number of electron at higher energy level या state कह सकते हैं. बराबर. Then see this is still proportionality, we have to make an equation. Then rate of stimulated emission is equals to B21 rho of V and 2. This is equation number 3 and it gives the rate of stimulated emission. ठीक है. Where क्या हो जाएगा, where B21 क्या है, B21 is a Einstein coefficient for stimulated emission.
स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड प्रोसेस वी कंप्लीट एंड दिस थर्ड प्रोसेस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, हमें तीन प्रोसेस मिले, पहली मिली थी एब्जॉर्प्शन, सेकंड वन वाज द स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड थर्ड वाज द स्टिमुलेशन एमिशन। वी गॉट दिस थ्री प्रोसेसेस। यहां तक आई होप आप सब लोग पहुंचे हैं ना। चलो नाउ सी वी डिस्कस दिस थ्री प्रोसेसेस till now. First one was the absorption process and it is indicated by the R absorption B12 rho of Vn1. Second process was the spontaneous emission. Rate of spontaneous is equals to A21N2 and third process stimulated emission, that is the rate of stimulated emission is equals to B12 rho Vn2, right? Now see, according to the equilibrium condition क्या कहते हैं? The number of electron jumps from lower to मतलब lower to higher and higher to lower is the same, right? मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही एमिशन होगा। डन। नाउ सी देखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन according to equilibrium condition, number of electron jumps from higher energy level to lower energy level must be equal to lower energy level to higher ना, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इमिशन करने के लिए ऊपर से नीचे आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन के लिए ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब इसमें क्या है, दैट इज एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एमिशन। एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू एमिशन होगा अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हाउ वी कैन राइट, देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, R absorption is equals to R spontaneous emission plus R stimulated emission। मतलब rate of absorption is equals to rate of spontaneous emission plus rate of stimulated emission। ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, satisfied होना चाहिए, बराबर। Now we will write this equation according to the formulas। तो R absorption क्या है, ठीक है, R absorption is a B12 rho of Vn1 is equal to R spontaneous क्या है, A21N2 plus B21 rho of Vn2, right? According to this equation number 3 हम इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं और क्या लिखेंगे, according to equation number 1, 2 and 3, equation number 4 can be given as this, right? ये प्रोसेस आपको करनी है, क्या है, मतलब we put the values of absorption, उसके बाद spontaneous emission, stimulated emission। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, डन, ओके। सी हमारे पास था rate of absorption is equals to rate of spontaneous emission plus rate of stimulated emission, right? इसको कहा था equation number 4, right? And according to equation number 1, 2 and 3, equation number 4 हमारा आया था B12 rho of Vn1 is equals to A21 N2 plus B21 rho of Vn2, right? Now see, अब क्या करें
this equation as B12 rho of V N1 minus B12 rho of V N2 is equals to A21 N2. Right? We can write this. Now see, we will take a rho V common. तो क्या जाएगा? Rho of V B12 minus rho of V B1 N1 minus B21 N2 is equals to A21 N2. Right? Now we can write rho of V is equals to A21 N2 divided by ये वाली टर्म पूरी डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? B12 N1 minus B21 N2. ठीक है, हम लोग इस इक्वेशन को कहेंगे इक्वेशन नंबर 5. यहां तक ठीक है? नाउ क्या कर रहे हैं? डिवाइड बाय B12 N2 to denominator and numerator. क्या कर रहे हैं? डिनोमिनेटर के ऊपर न्यूमरेटर को क्या करें हम लोग? B12 N2 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड करेंगे. तो क्या आएगा? रो ऑफ V is equals to क्या हो जाएगा? A21 N2 divided by B12 N2. राइट? चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? ये वाला प्रोसेस पूरा ऊपर लेते हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे? ये वाली टर्म यहां लेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रो ऑफ V इक्वल टू A21 N2 डिवाइडेड बाय B12 N2 होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? नीचे वाली टर्म B12 N1 divided by B12 N2 minus B21 N2 divided by B12 N2. Okay, I hope कि आप सब लोग यहाँ तक पहुँचे. ठीक है, N2 will get cancel, B12 will get cancel, यहाँ पे N2 will get cancel. ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा? सिर्फ अपने पास बचेगा रो ऑफ V is equals to A21 divided by B12 होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे इसको? रो V. ठीक है, क्या हो जाएगा? N1 by N2 minus B21 by B12. ठीक है, नाउ सी वी पुट क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन में? देखो इस इक्वेशन में क्या पुट कर रहे हैं? देखो वी पुट N1 by N2 को पुट कर रहे हैं लोग एक्सपोनेंशियल ऑफ h nu divided by k t से and B21 by B12 को हम लोग लेंगे 1 obviously. ठीक है, then this equation will become rho of V is equals to A21 by B12 whole divided by यहाँ पे लिखेंगे whole divided by
exponential of h nu by kt minus 1. ठीक है, आता ठीक है. Then we can write this equation as rho of v is equals to a21 by b12, right? Bracket में 1 divided by exponential of h nu by kt minus 1. और this is the final expression. इक्वेशन इसको क्या लेंगे, कुछ 3 4 5 6 आ जाएगा ना अपना. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6 gives the relationship between Einstein coefficient a and b. ठीक है बॉस, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू हैव टू डू इट वेरी वेल. अगर कुछ नहीं समझा होगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको. ठीक है, चलो ओके बाय.